Okay, so according to the last class, what percentage is? Can somebody tell me? Batao? Anyone? I So can this say. is my first class, sir. Okay, what's your name? So Sadhna. Sadhana, it's not your first class. Yesterday you were there For in. percentages. Okay, matlab, So like fractions and percentages. Are you talking yes, about that? yes, Oh, okay, yes. okay, okay. So So I was asking you Sir, what exactly percentage is. sir, Huh, tell me. so like Baba. in fraction we take whole as a one, but no, but in a fraction we take whole as a 100. Of course, matlab, percentage is a way to represent part, represent part, ठीक है, where if we consider the entire amount as 100, let's say, if you consider the entire amount as 100, and if I'm asking that ki what part of this circle has been dark, so you did say that 50% of the circle is dark because the entire circle is 100, then this uh, half of the amount which has been dark is 50%. So in fractional representation, it was 1 by 2, where the total was 1. And in percentage representation, it is 50%, where the total is 100. So now you know that in general, or the very basic understanding of percentage is that it is a part of total represented with respect to 100. So agar मैं general number, if I'll take general numbers, like if I take a number, let's say 60. So 30 is half of the number, and it is also 50% of the number. Okay, so every one of you must have created the table. I think probably Ria is new here. So Ria, you must have watched the lecture which I have given you on YouTube. Anna, have you seen that? देखा है तुमने उसको? no, sir. अच्छा, उसको नहीं देखा है, चलो कंटिन्यूड देखोगे. एंड एनीवे, मतलब फॉर एवरीवन आई एम सेइंग यू कि जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. तो अभी बस Okay. हम हाँ इस उस पे लेकर चलते हैं कि जब भी टोटल को 100 से कंपेयर किया जाए, तो व्हाट्सोएवर पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो पार्ट जो है उसको उसकी परसेंटेज वैल्यू मिलती है. जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इफ आई हैव 30x and out of which 15 are stale, सड़ा हुआ है. So if I'll ask how much percent of the egg, I'm intentionally taking just half of the number because you need to be matlab, I you need to understand that the way we are calculating here percentage, every number can be calculated like this. How much percentage of the egg are stale? So what will write that 50%. Why? Because in 30 it was 15. Then if I consider the entire 30 as 100, it will be 50 only. Any half of the quantity, that means 50% of the total. So here the numbers is very easy, and you can easily visualize that it is half of the number, and half is always 50%, that you know from the previous classes. What uh, if it is not direct fraction, a direct part or direct fractional representation? Like if I'll say there is a number 2400 and it could be anything. Tell me 648 is what percent of 2400? So basically now you have a problem that asks you if 2400 is 100, then what will be the value of 648? This will be the percentage value only.
तो इसको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll try to, or not try, I'll tell you to solve or calculate the percentage with respect to unit 3 method, and then we will have derive the formula with that method only. So if 2400 is total, the concerned quantity is 648. जैसे 2400 में 648 है। तो अगर 1 होता टोटल क्वांटिटी, जैसे फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता ही है, अगर 1 होता तो यही चीज जो कंसर्न नंबर है वो होता 648 डिवाइडेड बाई 2400. And if the total is 100, the ultimate task was to complete the total or not represent the total in 100 term. So if 2400 is now 100, then the concerned value, which is 648, that value will be 648 divided by 2400 into 100. So this will be your percentage value. आप इसको calculate करोगे तो you will find that it will be probably 27%. मतलब okay, मतलब let's not calculate or here, but I can also make this, and this will be divided by 27. So I'll say 27%. Then you say that 648 is 27% of 2400. That means if 2400, matlab 648 is the value in 2400, then if 2400 will be is converted into 100, the value will be 27% or 27 only, and then we call it is 27% of total. तो जैसे अगर मान लो कोई तुम पेपर दे रहे हो, if you are appearing into exam whose full marks is 2400 and you got 648 marks, है ना, तो if someone asks you how much percent did you score, how much percent did you score, that means he is trying to check or trying to ask you that in 100 how much you score, but actually you scored out of 2400. So we just converted the total into 100, and this percentage value you got here that you scored 27% marks. So now this representation we will convert into the formula. Like if you want to calculate anything's percentage value, we'll keep that and numerator out of the base value. Here 2400 is the base value. With this respect में हम percentage count करते हैं. With this respect we count the percentage. We'll keep it as denominator and we will multiply it by 100. So you must have learned this in your school also, but here you will remember the unitary method also, so that you can always tell and explain that how did you got this formula. So now it becomes very easy for you that if I'll ask you, let's take the same number. There is a number 2400. If someone asks someone let's take the same situation that a few students appeared for a paper where full marks is 2400 and A got 800 marks. So what percent did he score? So we have to calculate the percentage of 800 out of 2400, and then I will multiply it by 100. So this will be the formula to calculate. Although I'll remind you that you can also visualize it or do it through knowing the fractional representation. Like if you can easily see that 800 is 1/3 of total, 1/3 of total, then you know from the table that 1/3 of any number will be 33 1 by 3%. 3%. Exactly. So either you use this or you can do it through this, but again you can also say that not all numbers can be done through Converted this. into fraction. Exactly, converted into easy fraction. See, all the numbers can be converted into fraction, Yes, but sir. Yes. not those function which we have calculated or made the table. So fraction तो होगा ही होगा, मतलब fractional representation तो होगा. Like I'm telling you how.
if you'll say that how much percent would be 1272. So now this number is also a part of 2400. The fractional representation is there, but it's not very easy to think or visualize what it is. So here, if you want to calculate the percentage, you can use this formula where जिसका परसेंटेज निकालना उसको हम ऊपर रखते हैं और जिसके ऊपर निकालना रहता है जैसे लाइक 2400 is the base quantity and I'll multiply it by 100. So this is the way to calculate, but again we can make it little easier also. Just a second. इसको थोड़ा और आसान किया जा सकता है by dividing the numbers into parts. See, so now you know the fractional way of calculating percentage or tabular way or the formula also, but I'll give you another way to calculate percentage. See, for that easy method, you need to understand one thing, that percentage has additive property. Additive property, that means like कि कोई बताओ 2400 का वो अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, एवरी 24 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1. सो 2400 को ऐसे हम 100 टाइम्स लिखेंगे और 100 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हेन वी आर कन्वर्टिंग 2400 into 100, the 1 has a value of 24. That means 1% of 2400 is 24. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? So could you repeat it? Like I didn't understand. I'll repeat it. Just a second. So Akanksha has given the response in chat. Akanksha, you could have done it in for everyone also. You don't have to do it direct message to me. So you have done it right, and let me explain it to everyone also. So the thing is that the 24, like if you divide 24 into 100 parts, because you are making 24 into 100, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं. तो आपको 2400 को 100 छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे ना, तो एक पार्ट क्या होगा आपका 24 होगा. दैट मीन्स 1% ऑफ 2400 विल बी 24. अब समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो इफ आई ऐड 24 प्लस 24, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल बी 1% प्लस 1%, 2%. Yes, sir. Yes. So what it meant here, that percentage had distributive property. Like if you add 5% and 1%, it will become 6% of total. Okay. Did everyone get Yes, that? sir. Okay. Yes, sir. So now you know that percentage had additive property. So what I'll do, I had to calculate, see here, I had to calculate 1272, percentage value of 1272 with on 2400. The base is there. So I can easily visualize that 1272 can be represented as 1200 plus 24 plus 24 plus 24. Can you see it easily? Yes, sir. So now 1200, everybody knows that 1200 is half of 2400. So it is 50%. And 24 is what? 1%. 1%. And Sir, this but 24. can this be applicable in every case? But I don't think we can split it evenly, right? So like some numbers won't probably. Why can't you tell me any number? I'll tell you how Oh, you can easily visualize what will be the percentage value. okay. So Give me a number. 785. Okay, I'll be keeping 2400 as our base value. Okay, sir. And you want to calculate 785. 85. So see, with my level of not level of knowledge, I'll not say my level of what I can say visibility.
है ना, on the numbers. What I see, whenever I see a good number like 2400, I can easily visualize some parts of it. Like I can see that 240 will be 10%. You can also see that, ऐसा नहीं है कि मेरे level पे आना पड़ेगा. You can also visualize that. आप एक जीरो हटाते हो किसी number का, you get 10%, है ना, 1/10. 1/10 of any number is 10%. Yes, sir. You can also see that 600 is 25%. Can you see that? 600 क्या है? 1/4 है Yes, sir. है ना? Similarly, अगर हम 800 is 33 1/3%. Can you see that? 1/3. 800 is 1/3. Yes, ये sir. पहले 1/3. हाँ. Yes, sir. So there are few values we can easily identify that what is happening. Like 400 will be 1/6, which is 16 2/3%. So you can visualize. So with this knowledge, I can see that this number can be converted into 720 plus 24 plus 24. How much value did I get till now? 768, है ना? And plus 17. समझ में आया ये? हाँ, sir. Yes. Why 720? Because it is 3 times of 240. समझ में आनी बात? It is 3 times of 240. That's why it took 720 at one go. Otherwise, you could also write कि 600 लेकर फिर 120, मतलब you could have written it as 600 because I know what is the percentage value of 600. I would have taken 120 first because I know the percentage value of 120 because if 240 is 10%, तो इसका half 120 कितना होगा 5%. तो इस तरह से भी हम कर सकते थे इसको अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा होता तो. So now you know you can write it like this or like this also. ठीक है? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया तुम्हारा 30%. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, yes. तो हाँ, this will be your 1%. This will also be your 1%. And if anything is less than 1%, तो जैसे मान लो कि हम फिर से एक यूनिटरी सिस्टम करते हैं कि 24 is your 1%. Then 1 will be, मतलब एकदम number 1 by 24%. And then 17 will be 17 by 24%. So अगर कोई भी चीज जो 1% से छोटा हो गया, we can just divide it by the 1% value. तो 24%. तो total कितना हो गया हमारा? If we'll add all these together, it will be 32 17 by 24%. Is it clear? बोलो. Yes, sir. Yes, yes. ठीक है ना ये? So you can actually convert all the numbers or represent all the numbers by breaking into simpler percentage. Okay. तो समझ में आया अभी सबको? Did everyone get the point? Got the point? Yes, sir. Yes, तो sir. एक छोटा सा होमवर्क सा लिख लो तुम लोग. आई एम गिविंग यू बेस वैल्यू. ठीक है, आई एम गिविंग यू वन बेस वैल्यू. जैसे 4200 आई टुक अ बेस वैल्यू एंड आई एम राइटिंग हियर सम नंबर्स. आपको इसका परसेंटेज बताना है. ठीक है, तो 462 860 2100. चलो ये तो सिंपल था, है ना. 600 742. ठीक है, और 7 नहीं 1700
60, मतलब you can take any number, you can also take your number और कुछ भी number लोगे and you have to calculate the percentage. So now you know the ultimate way to calculate percentage is the formula where जैसे मान लो अगर हमें 462 का percentage निकालना है तो I'll write 462 as a numerator, 4200 as a denominator and I'll multiply it by 100. And how did I get that? ये basically ये fractional value है 462 का and when it is multiplied by 100 you get percentage value. तो अब बात आती है रिवर्स की, लाइक ये तो हुआ कि नंबर्स का परसेंटेज वैल्यू, अब परसेंटेज का वैल्यू नंबर में कितना आएगा ये तुम्हें बताना है. तो जैसे मान लो कि if somebody said you कि that there was, let's take the same 2400, full marks of a paper was 2400 and somebody told you that I got 38%. So what was my mark? ठीक है, या what is the marks of 10? What is the value of marks of 10? तो इसमें क्या बताओगे, कैसे बताओगे? देखो पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द इजियर वे टू डू इट. तो जैसे फॉर्मूला में क्या है कि यू नो कि 38% का क्या मतलब होता है. इफ द टोटल इज 38, बताओ क्या बोल रहे हो, बोलो. इफ द टोटल, So like 38 out of 100, so like 38 by 100 होगा like percentage wise. हाँ मतलब देखो तुम बहुत कंफ्यूज करती हो. एकदम सिंपल सा इसके अंडरस्टैंडिंग हो. 38% मतलब कि इफ द टोटल मार्क्स इज 100 he got 38. ठीक है, did you get the point? Yes sir, yes If yes. total is 100 he got 38. तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे. if the total is 100 he got 38. ठीक है, so if the total is 1 he will be getting what? 38 by 100. And if the total is 2400 he will be getting what? 38 by 100 into 2400. 2400. So this will convert your formula as a formula also, that for any percentage calculation you'll write the base value into the percentage value that you have to calculate divided by 100. So I have just reversed this. So now this is your formula, or like ब्रह्मास्त्र तो नहीं बोलेंगे because it basically we never use that. बहुत रेयर इसकी जरूरत पड़ती है because the way I am teaching you you will never need this formula. तो ये हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत रेयर सब सिचुएशन के लिए याद रखना चाहिए because if it is सम वैल्यू जिसको आप फ्रैक्शनल आराम से नहीं कर पाओ या फिर आराम से विजुलाइज नहीं कर पाते तो यही आपको करना पड़ता है. तो पॉइंट ये है हुआ अभी हमारा कि now you know कि how to calculate the percentage value. But see, in most of the cases or the exam that you will be giving, आपके वैल्यूज बहुत सिंपल वैल्यूज ही रहेंगे इसी तरह के, जैसे 2400 मैंने लिया, 1800, मतलब there will be a 00 in the last, as the last 2 digit will be there. अब ऐसे केसेस में और कुछ ऐसा नंबर होगा जैसे 24 लिया मैंने तो 24 के फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, तो 1/3, हाफ, 1/5, 1/8 सब निकल जाएगा इसका. And you know through the table that what will be the different values of different fractional or different percentage. तो जैसे अगर हमें 38% निकालना है तो I will again use the same additive property of percentage. I know 38% can be written as 40% minus 2%. अब 40% कितना होगा, ये 10% का फोर्थ टाइम है, मतलब 10 into 4 हुआ. You know 10% is what? 10% is 240. 240. Exactly. So then 40% will be 960. Or minus, you know 1% is what? 1% is 24. 24.
So 2% is 48. So the value will be 912. ठीक है, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू और अपने उस टेबल के थ्रू मेनी ऑफ द टाइम्स वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑल द परसेंटेज वैल्यू। अब सेम नंबर का अगर तुमसे कोई पूछे कि कैलकुलेट 30 नॉट 38, सेम सेम नंबर का अगर हम तुमसे पूछे कि 76 2/3% निकालो फॉर 2400 अर्ली, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ? Because see, if you'll use this formula here, it will be a very difficult task to calculate the percentage. 2400 into 76 2/3 divided by 100 अगर हम करते हैं तो ये तो कट जाएगा, बट ये फिर multiplication will be very difficult to do. तो अगर हमें ये नहीं करना है, if you don't want to do that, do this. तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? 66 2/3, बिकॉज 66 2/3 तो हमें दिखता है कि इसमें से हम 66 2/3 निकाल सकते हैं। and why I am taking this, because this is 2/3 of the number. 66 2/3 टेबल सबने बना रखा है ना? Yes, sir. 2/3 of a number is 66 2/3%, और इसमें अगर हम 10% ऐड कर दें तो 76 2/3 बन जाता है। अब नाउ 2/3 ऑफ दिस नंबर 2400 का 2/3 कितना हो जाएगा बताओ? 1600 है ना। इसका 1/3 जो है, इसका 1/3 ये 800 होगा, और 2/3 जो होगा वो 1600 होगा। सो 1600 इज माई 2/3 नंबर, एंड 10% कितना हो जाएगा? 2/3 विच इज 1600, और 10% कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10%? 240, sir. 240, वेरी गुड। एंड नाउ आई विल ऐड दिस इजीली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1840। So did you see that calculating through this way is very easy than compared to this? तो कभी भी जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे तो it will be very helpful if we'll break the percentage into parts or numbers into parts in order to calculate the percentage value. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो इसको फिर से तुम एज एन कुछ एग्जांपल लेके कर सकते हो। I'll take, मतलब मैं होमवर्क की तरह दे देता हूँ यहाँ पे। तुमने पिछला वाला होमवर्क लिख लिया था ना एक तरह से। तो 4200 है, you need to calculate 15 2/7%, 49%, 85 1/3%, 90 5/7%, है ना। All these percentage will be मतलब you'll be able to break these percentage only if you have completed the table. And some few numbers will be very simple, like 61%, it is 60 plus 1, like 12%, it is 10 plus 2, है ना, like 25.5%, so like 1/4 and 0.5 more. So all these percentage value you can easily calculate, but I'm writing the only those percentage value which are 37 1/2%. तो ये सीधा सीधा क्या होता है? 3/8, if you know that, if you have done with the table. तो इस तरह से कोई भी परसेंटेज वैल्यू अगर तुम लिखते हो तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ क्लोजेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो देयर, और उसके बाद फिर एडिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये दो चीजें हुई। तो आपके क्वेश्चन में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, ईदर यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज वैल्यू और द वैल्यू ऑफ परसेंटेज, or the third type of question that you will be getting, and just a second. So is that number 25.5 or 255? नहीं, 25.5। Oh, okay, sir. ठीक है, तो just a second.
हाँ, तो the third way of the representing the percentage or the problem that you'll be getting, or uh, when you have the percentage value but not the total. तो इसको बहुत इजी समझना हो तो जैसे अगर मैं बोलूं कि half of any number, half of any number is 34, तो नंबर कितना होगा बताओ? If half of any number is 34, the number will be 68. 68, क्योंकि आधा अगर 34 है तो तुम बहुत आराम से 68 बताते हो. अब if I'll read 50% of any number, same is 34, तब भी आप वही बताओगे ना, 68 ही तो बताओगे. तो जो भी ऐसा कोई परसेंटेज है जो इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां से तो बहुत आसान होगा निकालना आपको. जैसे अगर मैं बोलूं कि 2/3 ऑफ एनी नंबर इज 26, तो आप टोटल कैसे निकालते हो? आपको पता है कि टोटल का थ्री पार्ट्स कर दे तो उसमें से 2 पार्ट की वैल्यू 26 है, तो पहले एक पार्ट की वैल्यू निकालते हो बाय कैलकुलेटिंग 26/2 और इनटू 3. सो दिस इज हाउ यू गेट टोटल. तो जैसे अगर हम इसी को हम ऐसे बोलते हैं 66 2/3% ऑफ एनी नंबर इज 26, देन टोटल विल बी. तो बेटर है कि आप इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करें. बट व्हाट इफ the percentage is not easily converted into the fraction, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेंगे? तो उस केस में क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि 42% ऑफ एनी नंबर, परसेंट ऑफ एक्स या जो भी 126 है, तो बेसिकली तुम क्या देखते हो कि 42% यानी 1%, 1%, 1%, 1%, 42% ऐसे जोड़ते हुए 42% तक चले जाए, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 126 है. तो सिंपल सी बात है, अगर हम 126 को 42 से डिवाइड कर दें तो व्हाट विल आई गेट? बताओ क्या मिलेगा मुझे? अगर अगर हम Value of 1%. वैल्यू ऑफ 1%, एग्जैक्टली. वैल्यू ऑफ 1%, और आपको निकालना है टोटल. तो टोटल क्या है? बेसिकली टोटल हम यहाँ पे वही विजुलाइज करते हैं कि टोटल तो 100% है, तो 1% को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई विल बी गेटिंग टोटल. तो वो काम हम यहाँ भी कर सकते थे, इस केस में भी कर सकते थे, बट ये कितना डिफिकल्ट होता कि अगर मैं बोलता कि 26 को तुम 66 2/3 से डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो जाता. तो अल्टीमेटली यू हैव टू रीच 100. तो पहले 1% पे का निकाल दिया और फिर तुमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये सिंपल. अब कभी कभी क्या होता है कि you can easily go to 100 by जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 8% is let's say 8% is 9, तो टोटल कितना होगा? तो एक तो वो भी तरीका है तुम्हारे पास, 9/8 इंटू 100 कर दिया है ना. दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली. बट एक ऐसा है कि जैसे हम 8 से तुम 4% पे आ जाओ, तो हालांकि ये नहीं करना तो बेटर है. तो इसके लिए हाफ किया तुमने तो 9/2 हो गया, और फिर इससे हम 100% जाएंगे तो एक्चुअली हमने 25 टाइम कर दिया इंटू 25 4 में, तो ये फिर आपका 9/2 इंटू 25 भी कर सकते हो. ऑल्दो ये और ये एक ही चीज है, तो बेटर है कि तुम यही यूज करो. ठीक है. तो यू इवन योर क्वेश्चंस शैल बी you can see कि it is categorized into these 3 type questions only. तो जब आप परसेंटेज की सीट आज चैप्टर खोलोगे तो यू विल डू द एक्सरसाइज देयर. आई एम नॉट शोइंग यू द एक्सरसाइज हियर, और आई कैन डू दैट ऑल्सो. एक मिनट, अगर ड्राइव यहाँ पे होगा, लेट मी सी. परसेंटेज का तो प्रॉब्ली डाउनलोडेड भी होगा.
Just a second. इसमें है Sir, हाँ I didn't quite understand third type, sir. The half of any number, like I understand what you're doing, but I don't understand the logic of it. लॉजिक मतलब कि सी जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 30 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, एंड Okay, sir. आई गॉट 50%, तो टोटल क्या होगा मेरा, मतलब फुल मार्क्स उस एग्जाम के कितने So होंगे, 660. तो कैसे निकाला तुमने इसको? I don't know, sir. अरे I just तुमने 50% का अब 50% का डबल 50%. होता Yes, sir. है ना? It was yes, sir. हाँ, तो हमने उसको बोला है कि जैसे कभी कभी तो आराम से दिख जाता है, जैसे लाइक यू सॉ हियर कि 50% का डबल कर देंगे तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी, बट समटाइम्स इफ यू आर नॉट इजीली एबल टू रीच 100%, तो हम अगर 30 मतलब 30 को 50% से डिवाइड कर दें, विल आई गेट 30 मार्क्स मिले थे मुझे, तो उसको 50% मैंने बताया, तो 30 को 50% से डिवाइड कर दे तो आई विल गेट व्हाट 1% की वैल्यू, ठीक है, Yes, sir. और 1% की वैल्यू मिलने के बाद 1% की वैल्यू मिलने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, Yes, sir. Okay, I understood. है ना, तो एवरी टाइम यू नीड टू फाइंड 1% एंड यू हैव टू रीच 100%, तो basically if we'll go in earth mix percentage, और किताब जिनके पास है वो किताब से भी कर सकते हो, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं these are either based on the first type or second type, mid type. प्रॉब्ली जो फ्रैक्शन वाली सीट है ना, उसमें डिटेल थोड़ा डिटेल तो क्या, उसमें भी हिंट दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट एनीवे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इनफ, तो इसको बाकी इस पूरे सीट को कर लेना परसेंटेज लेवल 1, एंड नेक्स्ट क्लास में आई हैविंग डाउट्स फ्रॉम दिस सीट, and then we'll be taking up different areas where percentage are used, or different type of questions of percentage, ठीक है, लेवल 2 वाला, तो इस परसेंटेज वाले में तुमको लेवल 1 भी करना है और लेवल 2 भी करना है, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो